So, just a brief introduction about the Jammu and Kashmir Medical Council, which was reorganized recently. As you know, it has a very important role to play. The most important role is the registration of medical professionals, allopathy doctors. So this is an important job, I suppose. I feel very important because unless you have a structured program for the professionals, the things will not be in the right direction. So with the same JK Medical Council, rather we have a Medical Council of India, which makes it mandatory that any medical professional, allopathic, who has to practice in the country should be registered with them. And the sub branches are there that every state has a medical council. Main job is to make sure that all the professionals who are practicing are working in a structured way. So recently, government of Jammu and Kashmir renovated also. So we have a new body now, and which is much stronger and more active also. And in addition, uh, the main job is if there is any complaint against a doctor, professional, or any grievance is there, or any wrongdoing has been done, it will be reported to the council, and the council will take a view of this. And in case any steps are to be taken, the necessary steps to be taken. On the same grounds, I also urge the government to make sure that all other branches of medicine, that is Ayurvedic, homeopathic, every branch which is practiced in the country should be similarly monitored. So you can't have somebody practicing without any certification or anything, and then making the fool of himself as a public as such. You see many quacks working in the city who are a danger to the society. So it is very important that every medical profession, especially of course all branches, all professions should be monitored by their respective councils and organizations, but more so in medical, because you are playing with the lives of the patients if you are not uh, properly qualified. So recently also some actions have been taken by the council for some complaints which are of grievous nature, and I think you must have reported also previously that something wrong was reported recently in Kashmir division, and the council, I suppose, has taken a serious view, and they are working on it, and they have taken steps also. Similarly, if all foreign graduates who graduate from different parts of the country cannot straight away start practicing in the country, they have to be registered. For that, certain criteria have to be fulfilled. It is equivalent to you have a general medical council in England, and similarly you have American body, European body also, who will not allow you to practice unless you are registered. And I also am the strong opinion that this registration should be upgraded, updated every 3 years or 5 years, be it in form of a repeat test. Some countries take a test also. Some countries see that you have progressed in that period. आपने conferences attend की हैं, आपने medical जो CMEs attend की हैं, so that your knowledge is upgraded. I really strongly urge my council members to pay attention to this thought also. You can't have somebody who's graduated now and after 10 years he has not progressed in his profession, because medical profession changes very fast. So some sort of monitoring has to be done uh, wherever upgradation, whenever you have to re-register, some sort of check has to be kept in place, so that the doctors or medical professionals do not play with the life of the patient, and they are upgraded on regular basis. I tell my other colleagues to please join. Dr. Vishal, you want to say anything? मैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विशाल टंडन, मेरे साथ में डॉक्टर हमारे वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप हमारे रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल हैं, ही इज़ दी उसके भी चेयरपर्सन है। मेरी इस साइड में डॉक्टर आशिमा बैठी हैं, ये को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, जीएमसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये सारी मेरी जो टीम है, ये एक हमने डॉक्टर साहब ने ही इंडीड एक स्टूडेंट डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल बनाई थी, ये उन्हीं के मेमोरांस हैं। और हमें ये लगा कि ये जो बच्चों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, फैकल्टी को भी। आज तक कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी तो सिर्फ फैकल्टी के लिए होती थी, तो हमें ये लगा कि स्टूडेंट्स दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट, क्योंकि शुरू से ही अगर उनको इन सब चीज़ों का एक्सपोजर होगा तो आगे जाके उनकी प्रोग्रेस, एकेडमिक ग्रोथ
बड़ी अच्छी होगी। और ये विजन इन्हीं का था जो हमारे डॉक्टर आशुतोष हैं, तो इनके गठन से ये बनी थी। आज ये उनकी पहली कॉन्फ्रेंस है और काउंसिल जो है, मेडिकल काउंसिल है, ये भी उसका मैंडेट है। मेडिकल काउंसिल का जो मैंडेट सर ने बताया उसको मैं जरा सरल तरीके से बताता चलूँ। डॉक्टर संदीप मेरे बगल में बैठे हैं, वो रजिस्ट्रार हैं। इसका मैंडेट ये है कि सिर्फ रेगुलेशन ही नहीं करना। एक हमें ये लगता है कि एक ये मापदंड है रेगुलेट करने के लिए, एक बॉडी है जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल है। इसका केवल काम रेगुलेट करना नहीं है, इसका काम एकेडमिक अवेयरनेस क्रिएट करना है, नंबर वन। इसमें ये करना है कि जो हमारे डॉक्टर्स पर्टिकुलरली जो पेरिफेरी में है, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके अंदर भी जो हमें एकेडमिक स्किल्स, अवेयरनेस, साइंटिफिक जो एक भावना है, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इसके अलावा उनको इथिकल प्रैक्टिसेस के दायरे में बांधना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट स्किल, जो हमने स्किल लैब का जो हमने एक स्किल की एक वर्कशॉप रखी, उनको स्किलफुल बनाना है, क्योंकि हमारी जो मेडिकल साइंस है वो डायनेमिक है, इट इज नॉट स्टैटिक। वो एक बार आपने सीख लिया तो सिर्फ वहां काम नहीं चलेगा, ये रोज नई प्रोग्रेसेस हो रही है, तो उसको मीट करने के लिए। और बड़ी बात यह है कि इस रीजन में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आया, आगे और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आएंगे, तो उनके साथ मैच करना पड़ेगा, कंपटीशन होगा। तो हमें ये जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल फैकल्टी है, इन सबको अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा। तो उसकी ऑब्जेक्टिव से ये कॉन्फ्रेंस जो है कंसीव की गई। मैं नाम लेता चलूं, हमारे प्रेसिडेंट जो काउंसिल के हैं डॉक्टर सलीम, ये उनका एक माइंड बेबी है, जो उन्होंने इस काउंसिल में पहली दफा इसके मैंडेट में लाया। ये पहले मैंडेट में नहीं था, पहले कभी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस काउंसिल ने नहीं कराई। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं हमारे वर्दी प्रिंसिपल का, ये कभी भी ना नहीं करते किसी एकेडमिक एक्टिविटी के लिए। जैसे मैं इनके पास अप्रोच हुआ, जैसे मैं और संदीप सर अप्रोच हुए, सो ही सेड यस वी विल डू, जॉइंटली वी विल डू। ये बहुत बड़ा वेंचर है, कितनी पार्टिसिपेशन है, क्या है, वो मेरी को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बताएंगे, फिर मैं डॉक्टर संदीप को काउंसिल के बारे में बात करूँ। आपके माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूंगी कि द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप विद हेल्ड फ्रॉम 13 February to 15 February 2025 that is organized by JK Medical Council in collaboration with Government Medical College Jammu. We are expecting more than 500 delegates across the country, and we received already 136 paper presentations. Apart from it, we received 46 poster presentations. In this faculty जो भी हमारे यहाँ eminent speakers आ रहे हैं, इसमें the faculty from the National Medical Commission, from the State Medical Commission, and the various faculties from the different medical colleges too. The one thing I would like to add on this कि इसमें हम जो the doctors across the country, including especially from the J&K doctors, shall be trained for ethics in clinical practice, communication skills, and the basic surgical workshops will be there. The last thing I would like to add, actually this is a common platform for all the doctors to share their knowledge, their experiences, their updation in the diagnostic tools, their updated koi unique any scientific papers. It is a common platform for all the doctors to share all this knowledge. Thank you so much.